So, Ms. Dhruti, small dot product review. Yeah, just a review of what we had done last time. So, find angle between, and I've said just find the cos theta between this vector and this vector. Are we clear about the question? Yes. Okay. So, now a question like this, all that we need to do is we understand that A dot B is equal to modulus of A modulus of B cos theta. Do we understand this? Yes. Achha. Further, do we understand? I'm not going into details because this is what we had done last time. So further, what we understand is that on the right hand side, you will get a number. Yeah. Just a number, or what is called a scalar. But on the left hand side, we have two vectors. Have I made myself clear? Yeah. Yes. So, we need to be very clear about this. On the left hand side, we have two vectors. Those vectors, we are doing a dot product. And on the right hand side, we get a number. Are we clear about this? Yes. Basically, what I'm trying to tell you is कि dot product का जो result होता है, वो number होता है, वो vector नहीं होता. Are we clear? Yes. Why we need to understand this is because in the next topic that we will be doing cross product. अब cross product का जो बच्चा होगा वो फिर से vector होगा, वो number नहीं होगा. Are we clear? Yeah. Yeah. तो एक तो ये बात हमारे दिमाग में एकदम वेल्ड हो जानी चाहिए, इसमें कभी डाउट नहीं आना चाहिए कि अगर आप डॉट प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आपका रिजल्ट एक नंबर होगा, और अगर आप वेक्टर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो उसका जो रिजल्ट होगा वो फिर से एक वेक्टर होगा. दिस शुड बी वेरी क्लियर. आर वी क्लियर? या करेक्ट. ओके. आई एम जंपिंग द गन. मैं थोड़ा आपको ज्यादा बता रहा हूँ, डोंट वरी. थोड़ा डिटेल में जाएंगे क्योंकि वेक्टर प्रोडक्ट मैंने बोल दिया, तो मैं अभी से थोड़ा सा उसका बेस बना देता हूँ कि वेक्टर प्रोडक्ट में वी अंडरस्टैंड कि जैसे यहाँ कॉस थीटा लिखा हुआ है ना ध्रुति डॉट प्रोडक्ट में, तो वेक्टर प्रोडक्ट में ए क्रॉस बी किसके इक्वल होता है? मॉडुलस ऑफ ए मॉडुलस ऑफ बी साइन थीटा. आर वी क्लियर? मॉडुलस की म्हणजे इट मींस मैग्नीट्यूड, राइट? शाबाश शाबाश. तो वेक्टर में जब भी आप ऐसे लिखते हैं, दिस इज कॉल्ड मॉडुलस of vector vector A, and this is basically the magnitude of vector A. Are we clear? Yes. देखिए, you are a math student, तो anyways वेक्टर जो है वो आपका टॉपिक है ही है, 12th में आपने करना ही है, तो अभी समझ लीजिए ताकि 12th में आसानी रहे. Have you got it? Yeah. And you know when we आप जैसे when we are reading the textbook आप पढ़ रहे हैं तो टेक्स्ट बुक में ऐसे करके लिखा हुआ, देन यू शुडंट गेट कंफ्यूज किया अरे ये क्या लिखा हुआ है. आर यू गेटिंग इट? तो हमें उसकी जो टेक्स्ट बुक की जो लैंग्वेज है वो भी समझनी पड़ेगी. आर वी क्लियर? यस. मैं इस क्वेश्चन को छोड़ के थोड़ा सा आगे बढ़ गया हूँ, डोंट वरी, बिकॉज दिस विल हेल्प अस इन वेक्टर प्रोडक्ट आल्सो, सो डोंट वरी. बट यू नो वन थिंग दैट यू नो इफ यू आर टेकिंग सम इंटरेस्ट, वन थिंग दैट यू वुड हैव ऑब्जर्व्ड इज कि ये जो है ये फिर से नंबर बन जाएगा. आर वी क्लियर? क्योंकि मॉडुलस ऑफ ए फिर से एक नंबर है, ये कोई नंबर ही होगा. ये मॉडुलस ऑफ बी फिर से नंबर होगा, और साइन थीटा की वैल्यू भी नंबर होगा. तो आप तीन नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो तो नंबर ही बनेगा. आर वी क्लियर? करेक्ट. इज देयर समथिंग रॉन्ग इन दिस? नो. भाई भी दोनों नहीं सुन रहे. अरे वेक्टर प्रोडक्ट का जो आंसर है वो क्या बनना चाहिए? वेक्टर. बट यहाँ क्या बन रहा है? नंबर. सो इज देयर एनीथिंग रॉन्ग विद दिस? यस. ध्रुति नहीं समझ में आया? इज ध्रुति, शुड आई रिपीट? नो इट्स ओके, आई हैव अंडरस्टूड. देखिए बेटा, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि ए क्रॉस बी जो है वो वेक्टर बनना चाहिए. आर वी क्लियर? यस. बट अभी मैं आपको बोल रहा हूँ कि ए क्रॉस बी जो है वो किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ बी इनटू साइन थीटा.
yes. ये जो है बेटा ये तो नंबर बनेगा, Hmm. बट यहाँ तो हमें वेक्टर दिख रहा है. सो दिस समथिंग इज मिसिंग इन दिस फॉर्मूला. आर वी क्लियर अबाउट दिस? Okay. Yes. आर वी क्लियर? तो ये फॉर्मूला इनकम्प्लीट है. आर वी क्लियर? हैव आई मेड माई सेल्फ क्लियर? Yes. तो यहाँ कुछ तो और चाहिए जिससे ये पूरा का पूरा जो है वो फिर से वेक्टर बन जाए. आर वी क्लियर? इज इट मेकिंग सेंस? Yes. And that something is called a unit vector. Is called a unit vector. Are we clear? Yeah. Unit vector. अब वो यूनिट वेक्टर क्या होता है, ये यूनिट वेक्टर क्या होता है, वो दैट विल डू इन 10 मिनट्स. अभी मैं उसको नहीं करूंगा. बट व्हाट आई वांट टू टेल यू इज कि ब्रॉडली डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट में बेटा जो फर्क होता है वो ये होता है कि यहाँ कॉस थीटा है तो यहाँ साइन थीटा है, और ये जो है ये नंबर है, बट ये जो है ये पूरा वेक्टर है. आर वी क्लियर अबाउट दिस? ये फंडा समझ आ गया? Yeah. तो क्योंकि इसके बाद जो हमने करना है वो वेक्टर प्रोडक्ट ही करना है, तो आई थॉट कि मैं थोड़ा सा एक आई विल टेक अ डिटूर, थोड़ा सा मैं बेस बना देता हूँ आपका और फिर आगे चलता है. सो आर वी क्लियर टिल हियर? Okay. डॉट प्रोडक्ट तो हमें समझ आ गया ना. Yes. हमें ये समझ आ गया कि यार डॉट प्रोडक्ट जो भी होगा वो एक नंबर होगा, और वेक्टर प्रोडक्ट पता नहीं हमें कैसे करते हैं, बट हमें ये तो समझ आ गया कि जो वेक्टर प्रोडक्ट होता है दैट इज उसका जो रिजल्ट होता है वो एक वेक्टर होता है. आर वी क्लियर टिल हियर? Yes. ये इधर उधर की बातों के बाद लेट अस कम बैक टू द क्वेश्चन कि यार इसका एंगल बताइए. इन दोनों जो वेक्टर्स हैं इनका एंगल बताइए. तो एक वेक्टर ये साइड बाजू देख रहा होगा, एक ये बाजू देख रहा होगा, तो आपको बेसिकली ये जो दो वेक्टर्स हैं इनके बीच में ये वाला जो थीटा है, और थीटा भी नहीं निकालना फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन, मैंने आपको बोला है कि जस्ट गिव मी द कॉस थीटा. Yeah. Dhruti, are we clear? Yes. Can you guess how to find the cos theta now? Yeah. Wait. Let me think. Yeah. Uh, So Dhruti, your answer is absolutely fine. No problem with your answer. So first, what you were saying is that we have to do this operation A dot B. Now this is very simple. The coefficient of I multiplied by coefficient of I, coefficient of J multiplied by coefficient of J, coefficient of K multiplied by coefficient of K. Have we understood this? yes. Yeah. So 2 into 1 is 2. I'll note here. 3 into minus 1 is minus 3. Minus 4 into 4 is minus 16. Are we clear? Yes. So the answer that you would have got is minus 19 plus 2. That would be minus 17. Are we clear till here? Yes. So this would be minus 17. Are we clear? Wait. 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 One second. Let me just check again. And then Dhruti, I'll have to calculate the magnitude of A, magnitude of B, yeah, on the right hand side. Yeah. So magnitude Yes. of A would be equal to square root of 4 plus 9 plus 16. Are we clear? Yes. It's basically A square plus B square plus C square. Do you remember? Yes. If this Yes. is a vector, then its magnitude is given by this. Are we clear? Hmm. Correct. So 9 plus 4, 16. 9 plus 4, 13 plus 16, root 29. 29. So B would be equal to 1 plus 1 plus 16 would be Yeah. equal to root 18. Are we clear? Wait. Wait. One second. Let me check. Yeah. इसमें भी मैंने गड़बड़ की, so I got the wrong answer again. But have you understood how to do these questions? That is more Yes, important. वो ठीक है. I have. देखिए आप जो कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं वो ठीक है, वो एटलीस्ट मुझे चलेगा, ऑफ कोर्स एग्जाम में नहीं चलेगा, बट माय इंटेंशन इज कि आपको जो क्लास 11th का काम है वो तो समझ आना चाहिए. ये तो जो आप कैलकुलेशन में गलती कर रहे हैं वो तो 7th 8th की आपकी प्रॉब्लम है, तो Okay. दैट इज नॉट माय जॉब, वो आपको खुद से देखना पड़ेगा. बट माय जॉब इज कि आपको ये समझ आ जाना चाहिए कि हाउ टू फाइंड
this. Are we clear? Correct. That's what I've done. यहाँ तक समझ आ गया? Yes. Okay. So this would be the angle, and of course you can find the of course you can find the angle and whatever. I don't want to stretch that further. What I am interested in discussing with you now is question number 2. Are the above two vectors perpendicular? Can you answer this question? What? Are the above two vectors perpendicular? This vector and this vector, are they perpendicular to each other? Have you understood? How do you find that out? Yes. And that is what I wanted to discuss with you. See, if the two vectors are perpendicular, then the angle would have been cos 90. Are we clear about this? Correct. And cos 90 we know is 0. Yes. Is this 0? No. So are the two vectors perpendicular? No. Are we clear? Yes. Yeah. Question number 3. Are the above two vectors parallel? Do you think they are parallel? They shouldn't be parallel, because if they were parallel, the angle between them would be 0 degrees. And cos 0 is this. Yeah. Yes. 1. Shabash. So they are not even parallel. Are we clear about this? Yes. So this is a sort of small revision that I wanted to do with you about dot product. Are we clear? Yes. Okay. And now let us start the topic of finding the vector product. Are we okay till here? Yes. Do you want to do another question of dot product? Or is it? No, it's okay. I've understood. Okay, great.